Welcome students to chemistry concept and let's discuss what is entropy. Okay. So what is entropy? Single line में अगर हम बोलें तो it is degree of randomness or disorder of a system. किसी सिस्टम की randomness या disorder कितनी है ये पता चलता है एंट्रोपी से. Okay. एंट्रोपी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एस से एंड डेल्टा एस रिप्रेजेंट्स चेंज इन एंट्रोपी. सो व्हाट इज एंट्रोपी? इट इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर. नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ रैंडमनेस? हम सबने पढ़ा है दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर अंडर रैंडम मोशन, केओटिक मोशन. उनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, सारे मॉलिक्यूल्स कहीं भी रैंडमली घूमते रहते हैं. ऑर्डर, एक पर्टिकुलर पैटर्न में मॉलिक्यूल्स का अरेंज होना. डिसऑर्डर, देयर इज नो पैटर्न. सो मॉलिक्यूल्स कितने रैंडमली मूव कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी. अगेन आई रिपीट, एंट्रोपी इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम, दैट फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम हाउ रैंडमली और डिसऑर्डरली मॉलिक्यूल्स आर मूविंग. ओके, इफ आई टॉक अबाउट solid, liquid and gas, can you tell me which of the three states of a system has highest randomness? Solid, liquid और gas में से किसके पार्टिकल सबसे ज्यादा रैंडमली मूव कर रहे हैं? यस, गैस की. सो गैस की रैंडमनेस सबसे ज्यादा है, यानी कि इसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा है, followed by liquid and least in the solid. Now you got it. Molecules of gas are highly random in motion, so entropy of gas is maximum. Then comes liquid and the minimum in case of solid. So if H2O solid, that means ice, is converting into H2O liquid, that is melting is taking place, ice is melting into water, which one will have higher entropy, the liquid or solid? Obviously liquid. So for this particular change, delta S would be entropy of product minus, we can say, entropy of reactant, or we can say entropy of H2O liquid minus entropy of H2O solid. And we know that in this case delta S would be positive, entropy is increasing. Okay, again if I say, let's say nitrogen reacting with hydrogen to form ammonia, another gas molecule, and we balance it. This is not balanced one, let's balance this one. Now whether in this process entropy is increasing or decreasing, बताइए इस पूरी रिएक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, तो इसका हम कैसे पता लगाएंगे? यस, बाय काउंटिंग नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. रिएक्टेंट साइड में जो टोटल गैस मॉलिक्यूल है वो है 4, 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. देयर आर 4 गैस मॉलिक्यूल्स. ऑन द प्रोडक्ट साइड देयर आर ओनली 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स. So in this particular reaction, number of gas molecules is decreasing. That means entropy is decreasing or entropy change would be negative for this particular reaction. इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि entropy depends upon temperature. अच्छा, I hope this thing was clear to you. If yes, let's test with a problem from NCERT book. Predict in which of the following entropy increases or decreases. Again, a liquid crystallizes to form solid. Liquid is converting into solid. बताइए तो जरा, randomness increase हो रही है या decrease हो रही है? It's decreasing. That's why entropy is decreasing. Delta S is negative. Entropy is decreasing in first one. अच्छा, सेम सॉलिड है, उसका टेम्परेचर बढ़ाया गया है फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन. वी हैव इंक्रीज द टेम्परेचर. ओके, सो व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, obviously randomness of the molecules increases, so entropy is also
increasing in this case. Third की बात की जाए, it's a chemical reaction given and on the reactant side there are only solids, there is no liquid or no gas molecule, but on product side there are two gas molecules, one carbon dioxide and one water vapor. The side which has greater number of gas molecules will have higher entropy. So in this one, because number of gas molecules is increasing, so entropy is also increasing. Similarly, in the last one, you can say there's only one gas molecule on the reactant side, but there are two gas atoms on the product side. Doesn't matter if it is a liquid or if it is a molecule or it is an atom, number of gas particles is increasing, so entropy is also increasing. I hope these things were clear to you. If not, you can always ask in our comment section. चलिए कुछ और देखते हैं. Entropy of a system and surrounding. I hope you know what is system and surrounding, and if not, I have made the videos on system and surrounding in this playlist only. You can go through them. Okay, now the concept is the total entropy change of a system and surrounding of a spontaneous process is given by this. Let's say एक सिस्टम है, मैं कंटेनर में वाटर को हीट करता हूं, दो ही चीजें होंगी, या तो हीट सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर जाएगी या सिस्टम से सराउंडिंग हो जाएगी. एनीवे द टोटल एंट्रोपी इज सम ऑफ एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग. टोटल का मतलब है डेल्टा एस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल्स टू एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग. ये एक इक्वेशन थी. ओके, अच्छा एक चीज और दे समथिंग कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट लॉ प्रीवियसली. द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट यही है कि whenever a spontaneous reaction takes place, entropy of universe increases. Delta S of universe is always positive in case of a spontaneous reaction. अगर spontaneous reaction हुई तो चाहे वो सिस्टम में हो या सराउंडिंग में हो, एंट्रोपी टोटल हमेशा इंक्रीज ही होगी. हो सकता है सिस्टम की एंट्रोपी कम हो जाए, सराउंडिंग की बढ़ जाए, लेकिन दोनों का जो सम आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा. This is the second law of thermodynamics, that whenever a spontaneous reaction takes place, entropy of system increases. Okay, entropy का फॉर्मूला क्या होगा? Okay, entropy का फॉर्मूला क्या है? तो entropy का एक फॉर्मूला है delta S equals to Q upon T. Okay, delta S is Q upon T, where Q is the heat, T is the temperature. Okay, now this is entropy change. Now one more thing, very interesting thing. Most of the reactions in the universe, or we can say on our earth itself, take place at constant pressure, because हमारे जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो 1 atm है. उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डेल्टा एस इक्वल्स टू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बाय टी, and actually heat released at constant pressure is nothing but enthalpy change. So we can say that delta S is nothing but delta H upon T. अच्छा, ये है सिस्टम के लिए. अगर मैं सराउंडिंग की बात करूं तो लेट्स से अगर सिस्टम से हीट निकली है तो सराउंडिंग में जाएगी, और अगर सिस्टम को हीट एब्जॉर्ब करनी है तो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब होगी. तो अगर सिस्टम के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव है तो सराउंडिंग के लिए नेगेटिव होगा, एंड वाइस वर्सा. तो अगर मैं सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालना चाहूं, आई हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन हियर. इट विल बिकम डेल्टा एच अपॉन टी. सो फॉर सिस्टम, दिस वन वाज फॉर सिस्टम, it is delta H upon T. For surrounding it is minus delta H upon T. इस पे हम और आगे डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, that how is entropy linked to the spontaneity. You can watch that video, and if you have any doubt you can ask in our comment section, and please don't forget to like, subscribe and share this video.
Thank you.